See, this is the one of the most important concept over here. So we are given with a random variable x that has a PMF given by this, and we need to find the mean and the variance. So look at this PDF. This PDF is similar to, I guess, binomial distribution, binomial PDF, PMF, sorry. So this is the simple manipulation of binomial distribution. So we can write it as 10cx 1 by 5 10 plus x minus x. So this is correct. So whenever x minus x cancels each other, we will get the 1 by 5 raised power 10. That's 1 by 5 raised power 10. That's 2 raised power x and 3 10 minus x. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज ए सिंपल मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन इन व्हाट सेंस कि हमने प्लस एक्स और माइनस एक्स को ऐड किया, मतलब प्लस एक्स फिर माइनस एक्स किया, तो ये कैंसिल होके 1/5 यही टर्म फिर से वापस आएगी. क्लियर. और 2 raised power x as it is, 3 raised power 10 minus x as it is. Now this is 10cx. So if I can do one thing, that's 2 by 5, and from this I will take this x as common. So you can see 2 by 5 x, then 3 by 5, and I can take 10 minus x as common. So this becomes the complete binomial distribution. So from here I can say x follows binomial, n is 10, comma, what is p? This is ncx, px, qn minus x. So this is 10 comma 2 by 5. Now from this I can calculate expectation of x, that is 10 into 2 by 5, that is np, as you all know. What's n? N is 10, and what's p? P is 2 by 5, that's 20 by 5, that is equal to 4. Now what's variance of x? As you know, that's npq, which is 10 into 2 by 5 into 3 by 5. 5 ones are 5, 2s are 2, 2s are 4, 3s are 12. 12 upon 5, which is equal to 2.4, is the correct option. So as you know, this was the binomial distribution, but we did a manipulation here, then we got the result. Okay, now see, the question is, if x follows normal 0 comma 1 with mean 0 and variance 1, and conditional distribution of y given x follows uniform with parameters x minus 1 and x plus 1, then we need to find the expectation of y given x ka whole square. Clear? So see how we can approach this question. As you know, y given x is equal to x follows uniform x minus 1, x plus 1. So expectation of y given x is equal to x will be equal to, as you know, when x follows uniform a comma b, then the expectation of this x will be a plus b divided by 2. Clear? So here this is x minus 1 plus x plus 1 divided by 2. So from here this one and this one cancel out, and we are left with the 2x divided by 2. So this 2 cancel out. So expectation of y given x is equal to x, that is equal to x. The expectation of conditional distribution is x. Now what will be the expectation of y given x is equal to x square? That will be x square simply. Clear? So from here we need to calculate expectation of
expectation of y given x square, that is equal to expectation of x square, and expectation of x square, as you know, this is equal to variance of x plus expectation of x square. Clear? As you can see from the distribution of x, that is normal 0 comma 1 with mean 0, so this term will be 0 because this is the mean square, this is not the mean square, right? So and variance is 1, so variance is 1, so 1 is the correct option for this question. Clear? See, the next question is, uh, let x follows poison 3 and y follows poison 2, and the correlation between x and y is 1 by 2. Then find expectation of y, variance of x plus y, covariance of x plus x comma y. So see, whenever x follows poison lambda, the mean is this lambda, that's equal to 3, so expectation of x is equal to 3, and variance will be as same as the expectation. As you know, variance and expectation is always equal in case of Poisson distribution. Y follows poison 2, so expectation of y is equal to 2, and variance of y is also equal to 2, and the correlation between x comma y is equal to 1 by 2, so 1 by 2 is equal to covariance between x comma y, variance of x into variance of y, right? So from here, what's covariance x comma y? That's unknown. So what's variance of x? That's 3. So this will be equal to, that is 3, and this is 2. So from here, the covariance between x comma y is equal to 2 root 3 root 2. So this is my covariance, right? So I need the variance of x plus y, that's variance of x plus variance of y plus 2 covariance x comma y. As you know, if independent is given, then the covariance will be 0, but x and y are not independent. So from here, what's x variance of x? That is 3 plus 2 plus 2, and this covariance, that is 2 root 3 root 2. So this is equal to 3 plus 2 plus 4 root 3 root 2 is variance of x plus y, that is equal to 5 plus 4 root 3 root 2. Clear? So this is my answer. Now another question is, we are given with the moment generating function of binomial distribution, that's 0.6 plus 0.4 e raised power t whole raised power 8, where here 8 represents the number of trials and this is the probability of success and this is the probability of failure. Clear? So what is the MGF of 3x plus 2? That is expectation of E t. What's x here? 3x plus 2. So we need the expectation of this. Now with the help of property of MGF, so we can write it as E t 3x E 2 and with t. Clear? So E2t is constant. Now expectation of E 3x t. So compare it with the expectation of ETX, that is q plus p e raised power t. So here it's expected e raised power 2t
And what's the expectation of E tx? E tx. So this is 0.6 plus 0.4 E, and with t we are 3t. We are having 3t raised power 8. So this is our result. Clear? Okay. See, now the question is we are given with the random variables, independent random variables from normal distribution, that's x and y. Then we need to find the distribution of x square plus y square, then the probability of x square plus y square. As you know, when x follows normal 0 comma 1, y follows normal 0 comma 1, x plus y follows normal 0 comma 2. Clear? Now x plus y divided by under root 2 follows normal 0 comma 1. The square of this x plus y upon under root this whole square follows chi square 1. As you know, when x follows normal 0 comma 1, x square follows chi square 1. So this x square follow chi square 1, this follow chi square 1. So the x square plus y square follow chi square 2. Clear? So this term, that's y, is equal to x square plus y square follows chi square 2. Now the PDF of y is 1 upon gamma n by 2. N is 2. So 2 by 2 is 1. 2. Let me write the whole PDF first. 1 upon gamma n by 2, 2n by 2, e raised power minus x by 2, then x n by 2 minus 1, where x is greater than 0. So in place of n, we replace n with 2. That's 1 upon gamma 1, this is 2, e to the power minus x by 2. So 2 by 2, this becomes 0, x raised power 0. So this is my PDF, that's 1 by 2 e raised power minus x by 2. So f of y is my this. Clear? So what's this? This is basically exponential 2. This is basically exponential 2. So we need the probability between this. So can I write it as this? So as you know, how we can solve this? As you know, 1 by 2, this is e to the power minus x by 2 divided by 1 by 2. Then internal differentiation of this 0 to 4. This is 1 by 2 minus 2 e to the power minus x by 2, 0 to 4. So now this is equal to, this and this cancel out. So this is equal to minus e raised power minus 4 upon 2 plus 1. So this will be equal to 1 minus e to the power minus 2 is the correct answer. Simple integration, I did a simple integration over this. So as you know, this becomes this. Then put the limits into this. So whenever we put the limits, this becomes this, and e raised power 0 is 1. Clear? Hi everyone. So here is a question based on the transformation of random variables. So we are given with a PDF that's f of x is equal to alpha x alpha minus 1, and the range of x is between 0 and 1, 0 otherwise, right? So this is the question, and we need to find the distribution of the new variable, that is, find the distribution of y is equal to log x minus 2 alpha raised power minus 2 alpha is. So see, the question is saying that we are given with a PDF that is f of x is equal to x alpha minus 1.
and we need to find the distribution on this. So to deal with this question, we should remember the concept of transformation. So the concept of transformation is simple. Whenever we are going to talk about a new variable based on the old variable, we use the concept transformation, right? So to deal this question, let me show you the simple formula for this. So whenever we need the PDF of new variable, that's the old variable in terms of y, into Jacobian. So how to calculate this? See, yeah, you can put here, that's G inverse x Jacobian this. So this is the in terms of y, this is the function, old function in terms of y, that's G inverse x. How we can calculate this? So y is equal to log x raised power minus 2 alpha. Now can we write it as y is equal to minus 2 alpha log x? Clear? Now y divided by 2 alpha is equal to log x. Now e raised power minus y upon 2 alpha is equal to x. Is it correct? Now differentiate with respect to y. So this is equal to this. We differentiate, as you know, differentiation of e raised power x is e raised power x, then internal differentiation of x is 1, and if we have e raised power 2x, that's e raised power 2x, internal differentiation of 2x is 2. Similarly, differentiation of this is equal to this, differentiation of this is equal to this, dy, that's equal to dx. Clear? Now we have the new variable y, that's equal to, what's f of x? In place of x, put this. So alpha, what's x? E raised power minus y 2 alpha raised power alpha minus 1, that's alpha minus 1. And Jacobian, what's Jacobian? Jacobian is my this. So Jacobian is 1 by 2 alpha minus 1 by 2 alpha e raised power minus y by 2 alpha. So this is the mod. So as you know, in mod, if we have a negative sign, negative quantity, when we open the mod, we get the positive term. So here is the mod of j, that is alpha e raised power minus y upon 2 alpha, alpha minus 1, and Jacobian of this is 1 upon, this is equal to 1 upon 2 alpha e raised power minus y by 2 alpha. This and this will equal to e raised power, this will be equal to 1 by 2 as it is, and whenever you solve these terms, so this will become e raised power minus y by 2 if y is greater than 0 or otherwise. Let me tell you the range of this x here. Whenever x is my between 0 and 1, so y is equal to this. As you know, log 0 is equal to 1, so the value of y is equal to minus 2 alpha. This is whole here calculus. So transformation is basically based on the calculus. So if your calculus is good, transformation will be good. Okay. So this is the one more question based on the univariate distribution.
we are given with the PDF f of x is equal to, basically this is the beta distribution. This is the beta distribution with parameters m and n. So this is 6 comma 4 here. So we need to calculate the expectation of this. So as you know, if x follows beta m comma n, beta first kind m comma n, then x upon 1 minus x will also follow beta first kind m comma n. So this is always true. Now we go with the general solution of this. So we need the expectation. Let's suppose this is y is equal to x, 1 minus x. So the range is always 0 to 1. So 1 upon beta 6 comma 4, expectation of y, that is x 1 minus x. So this is x5 1 minus x3. As you know, this will cancel out with this, so it remains here 2. So this is 0 to 1, 1 upon beta 6 comma 4, and this the power of this x is 1, so 5 plus 1 is 6, x6 1 minus x square dx. Clear? So this will become 0 to 1 x6 1 minus x square dx. So this is again beta. This is again beta. How this is again beta? As the range of x is 0 to 1 and the function is like this. So this is equal to 1 upon beta 6 comma 4. So this is beta m minus 1 n minus 1. So what's m? M is 7 minus 1, that's 6. What is this? This is 3 minus 1, that's 2. This is 3. So m is here 7 or n is here 3. So this is gamma 7 gamma 3 upon gamma 10. How you write beta m comma n? That is gamma n gamma n gamma m gamma n gamma m plus n. So what's this? This is gamma 6 gamma 4 gamma again 10. So this will cancel out with this. So this becomes, this is 6 factorial, this is 2 factorial. What's gamma 3? That's n minus 1 factorial. Gamma n is n minus 1 factorial. So this becomes 5 factorial and this becomes 3 factorial. As you know, 6 into 5 factorial multiply 2 factorial divided by 5 factorial into 3 into 2 factorial. So this goes, this goes. So 3 ones are 3, 2s are 2 is the correct answer of this question. Clear? 2 is the correct answer of this question. Hello everyone. तो see question क्या है? Question is the one of the most important over here. So the question is asking if this recursive relation is equal to n minus r divided by r minus 1, and we have a random variable from discrete distribution, then we need to find the mean and variance of that discrete random variable. So here this is xi, let xi be a random variable from discrete. So here, as you know, this is the recursive relation of binomial distribution. Binomial distribution क्या होता है binomial distribution में? Recursive relation, that's PR plus 1 upon PR is equal to n minus r divided by, and here n is equal to 6. यहाँ पे n 6 given है. n minus r minus 1 multiply p upon q. This is the recursive relation for binomial distribution. So look at this relation. This is similar to this, but p by q is missing. Actually p by q is not missing. P takes values 1 by 2 here and q also takes 1 by 2 here. So whenever
P is equal to 1 by 2, Q is automatically 1 by 2. So this is 1 by 2 multiply 1 by 2. So this 2 goes. So from here, as you know, this is a recursive relation for binomial distribution. So in binomial, expectation of x is equal to np. So what's n? N is 6. P is 1 by 2. So this is this and this goes. This is 2 1s are 2, 3s are. So expectation of x is equal to 3, and variance of x is equal to npq, that is 6 into 1 by 2 into 1 by 2. So 3 by 2 is the variance. Clear? So this is the one of the most important concept on recursive relation, how we can get the expectation, variance, or median, mode, whatever we want to calculate, right? So remember this from now onwards. So this is the one of the most. And in JAM 2023, same concept was asked, but the distribution was different. That was Poisson distribution. So there was probability r plus 1 is equal to log 2 upon x plus 1 into PR. So as you know, the recursive relation for Poisson is, in place of log 2, there is lambda. So lambda is equal to log 2. So we were asked about the expectation of x. So in that question, the expectation is equal to lambda. Clear? You need to remember the recursive relation for every discrete distribution, and we cannot find the recursive relation for continuous, as this is the probability at some point, not on interval. So whenever we calculate the probability on interval, we deal with the discrete distribution, and whenever we calculate the probability on interval, so we go for the continuous distribution, right? So this was the concept here. Hello everyone. So here is the question. We have let x be a random variable having PDF this. So basically x follows normal distribution with mean mu and sigma square is equal to 1. So analyzing the PDF of this x random variable, analyzing the PDF of this x random variable, so x follows normal with mean mu and sigma square is equal to 1. As you can see, the general PDF of normal mu comma sigma square is 1 upon under root 2 pi e raised power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma raised power 2. So this is the when we have normal mu comma sigma square. So from this PDF, we have sigma square is equal to 1. Clear? Then consider the another random variable, that's y is equal to function of x minus mu. So this is basically x minus mu upon sigma square. This will follow normal 0, 1. ये किसको फॉलो करेगा? ये नॉर्मल 0, 1 को फॉलो करेगा, एंड दिस इज नथिंग बट CDF ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल. This is the CDF. Let's suppose this is z. Z is the CDF of random variable x. So we transform this x random variable into CDF of this x. क्लियर है? मतलब हमने यहाँ पे इसका CDF ले लिया, एंड हमें यहाँ से जो CDF है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमें ये दिखाना है कि एक्सपेक्टेशन y इसके बराबर आएगा, या एक्सपेक्टेशन ऑफ y इसके बराबर आएगा, या वेरिएंस इसके बराबर आएगा, या वेरिएंस इसके बराबर आएगा. सो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. 2 methods are here. First one is general solution, second one is trick. ट्रिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन से वो आ जाता है. तो सी, whenever x follows normal mu comma sigma square, mu comma sigma square, तो यहाँ से हमारे पास क्या है? CDF है, तो x minus mu upon sigma square follows normal 0, 1. Let's suppose z, यहाँ y ले लो आप, this is y.
सो एफ ऑफ वाई, वाई क्या होगा, सिंपली माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2. सो दिस इज द सी डी एफ. किसका सी डी एफ है ये, इसका सी डी एफ है. तो इसका पी डी एफ कुछ ऐसे होगा, मतलब सी डी एफ जो हमने रैंडम वेरिएबल एक बनाया उसका पी डी एफ ये होगा. है तो ये सी डी एफ ही, लेकिन हमें किसका, हमें तो एफ ऑफ वाई चाहिए ना, स्मॉल एफ ऑफ वाई, तो वो ये होगा. क्लियर है, इस चीज़ को समझो. नाउ अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई चाहिए. दैट इज 0 to infinity. सी डी एफ तो 0 to infinity होता है ना, t is greater than 0. 0 to infinity y e to the power minus t square upon 2 dt. y लेना है ना, तो यहाँ पे y ले लो आप, dy. तो y y square upon 2 is equal to t. So y square is equal to 2t. So 2y dy is equal to, यहाँ एक कम करो, यहाँ पे y is equal to under root 2t. So dy is equal to 1 upon 2 root 2t. Now ये हुआ ना. Now f expectation of y is equal to 0 to infinity. What's y? Y is under root 2t e to the power minus t dt upon 2 root 2t. 2 root 2t 2 root tt cancel out. So this is 2 and this is gamma function, this is gamma 1. So 1 by 2. So expectation of क्या आया, 1 by 2. क्लियर है. देखो इसी को हम कैसे करेंगे, इसके बाद ये करना है आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है. 0 to infinity वाई स्क्वायर e to the power minus y square upon 2 dy. ये निकालना है आपको. तो जब आप ये निकालोगे तो फिर वेरिएंस ऑफ y भी आएगा. वो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर. हो गया ये ऐसे. नाउ रिमेंबर दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड 2. x follows normal mu comma sigma square. So z is equal to x minus mu upon sigma square follow normal 0 comma 1. So this is the CDF. So x minus mu sigma square will follow uniform 0 comma 1. So यहाँ से expectation of z आएगा ना 1 by 2 और variance of z आएगा ना 1 by 12. क्यों, यूनिफॉर्म का तो सबको पता होता है कि इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ x b plus a upon 2. So this is 1 by 2 and इसका वेरिएंस क्या होगा, b minus a whole square upon 12. So this is 1 by 12. क्लियर है. तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एमजीएफ गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि पीडीएफ ये एमजीएफ किसका है. ये देखो ऐसा एमजीएफ तो आपने देखा ही नहीं होगा कि डायरेक्टली आपको पता चले किसका एमजीएफ है. कोई कोई समझ रहा होगा ये पॉइजन का है, बट दिस इज नॉट द एमजीएफ ऑफ पॉइजन. तो इसको हम कैसे करेंगे, सी mxt इज इक्वल टू e 3t प्लस 3t स्क्वायर एंड यू नो mgf ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. mgf ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, e टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. क्लियर है. ये mgf है किसका, नॉर्मल का. एंड सी इसको और इसको देखो सिमिलर है ना. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास इसमें म्यू कितना है, म्यू 3 है. अब सिग्मा स्क्वायर की बारी है. अगर हम एक काम करेंगे 3/6 इंटू 6t स्क्वायर, 3 1 3 2 आया ना यही, e टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 ऑफ 6t स्क्वायर. मतलब सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे कितना है, सिग्मा स्क्वायर 6 है और म्यू 3 है. क्लियर है. देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे तो इस फॉर्म में उसको बनाना था, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6. सो 3 डिवाइड बाय 6 इज 1 by 2.
इंटू सिक्स जो है वो म्यू सिग्मा स्क्वायर है, क्लियर है। सो अब हमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस और इक्वल टू 3। अब आपको पता है जब भी हमारे पास नॉर्मल का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स एक्स माइनस म्यू कितना है, 3/√6, दैट इज लेस और इक्वल टू 3 minus 3 divided by √6. So this is equal to probability z less than 0 and this will be equal to phi of 0. Phi of 0 किसके बराबर होता है, 0.1, that's equal to 0.5 is my answer. तो देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमारे पास सर्कल एक गिवन है विथ रेडियस r एंड द रैंडम वेरिएबल लेट्स से दिस इज x, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका x का, दैट्स द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ ए सर्कल इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये पूछा गया है। तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे, देखो ये इसका 2 लाइन का सोल्यूशन है। कैसे, देखो हमें क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ ए सर्कल इज लेस देन 1। अच्छा, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट्स लेस देन 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी आर इज लेस देन 1। ऑप्शन भी लिख लेता हूँ मैं, दैट्स ऑप्शन नंबर 1 इज 1/2√π, 1/3√π, 1/4√π, 1/√π। तो सी हमें ये पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी आर लेस देन 1/r स्क्वायर इज लेस देन 1 दिस, सो प्रोबेबिलिटी आर इज लेस देन 1, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। नाउ अब सर आप कहोगे कि आपने तो इतना ही सॉल्व किया, नहीं इससे आगे भी सॉल्व करेंगे ना। तो सी कैसे, 0 to 1/π√π, और कहाँ से लिया है, यूनिफॉर्म 0,1 से, तो इसका ये होगा 1 dx, सो दैट्स इक्वल टू 1/√π इज द आंसर। क्लियर है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मुझे तो ये निकालना था, पहले मैंने ये निकाला कि r कहाँ से लेना है, r इज लेस देन 1/√π, और r का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का पीडीएफ क्या होगा फिर, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/b माइनस a, b कितना है 1, सो 1/1। तो इसका जो x का जो पीडीएफ होगा वो है 1, तो तभी मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और रेंज तो ये है 0 to, क्योंकि रेंज लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट यहाँ से निकाला ना हमने। सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। So देखो next question is, this is the one of the most important concept over here. So the concept is, whenever we are giving the some distribution, that's the binomial distribution, and we need to find the expectation of this. So the basic approach is, whenever we need the expectation of x, we do simply x p of x, clear. So here is the expectation of 5 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। इसको कैसे करेंगे हम, अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 to 3 5 1 प्लस एक्स, एंड एक्सपेक्टेशन इसी का चाहिए ना, एंड p ऑफ x, क्लियर है। एक तो हम ऐसे करेंगे, पहले x की जगह 0, फिर x की जगह 1, फिर x की जगह 2, फिर x की जगह 3, देन द प्रोबेबिलिटी, क्लियर। नाउ जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, मतलब कैसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स पूछा गया, या एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, इनमें तो गति खराब हो जाएगी। तो इनको कैसे करना है, इनको मैं डायरेक्टली आपको एक फार्मूला एक बता देता हूँ, देन उस फार्मूला से आप इनके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो जो डिनोमिनेटर में ऐसे रहेंगे। तो से जब भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स पूछेंगे ना, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, 1 माइनस क्यू एन प्लस 1 पी।
क्लियर है? अगर ये पूछा गया 1/1 प्लस एक्स देन 2 प्लस एक्स, इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस क्यू एन प्लस टू माइनस एन प्लस टू क्यू एन प्लस वन पी डिवाइड बाई एन प्लस वन एन प्लस टू देन पी स्क्वायर। ऐसे ये अप टू कहाँ तक जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स, 2 plus x, 3 plus x up to so on. And this result is given in the FMS. You can go through the FMS, तो उसमें ये concept आपको मिलेगा, ठीक है? Whenever you face these type of questions, या तो आप directly यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से, but this one is more general. अगर किसी को result याद है वो directly लिख सकता है। तो हमें यहाँ से पूछा क्या गया वो तो देखेंगे ना हम। देखो पूछा क्या गया, पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5/1 प्लस एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 5, फिर यहाँ पे क्या बचा 1/1 प्लस एक्स, ये फार्मूला यूज करो 1 माइनस 1/2 4 डिवाइड बाई 4 1/2, 2 1 2 2 so this is 5/2 1 minus 1/16, so this will be equal to 5/2 15/16. क्लियर है? इज इट क्लियर कि यहाँ पे 2 बचा, 2 तो बाहर आएगा, फिर देन दिस इज इक्वल टू दिस इज 5025 5 5 6 7 अपॉन 75/32 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो सी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर लेट x be a random variable with uniform distribution on the interval -1, 1 and y is equal to x plus 1 का whole square, then find PDF of y। PDF of y हमें देखना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो सी f of x क्या होगा? दैट इज 1/b minus a, that is equal to 1/, what's b? 1 minus -1, so this is equal to 1/2, where x is between -1 to 1 and y is equal to x plus 1 का whole square। so यहाँ से ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट y minus 1 is equal to x। now differentiate this function, तो ये क्या होगा? 1/2 अंडर रूट y dy is equal to dx। now जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे यूनिवेरिएट का, तो हम क्या करते, जब हमें f of y निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? f इनवर्स y इंटू dy/dx लेते थे। तो ये क्या आएगा? f इनवर्स y तो 1/2 है, मतलब ये फंक्शन अगर यहाँ पे x होता ना तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट y माइनस 1 पुट करते। लेट सपोज अगर यहाँ पे x/2 होता तो x की जगह में ये वैल्यू पुट करते, देन dy/dx दैट इज जैकोबियन ऑफ दिस जो हमने किया है। तो ये क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट y, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट y। सो देखो एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हमारे पास mgf गिवन है, तो ये किसका mgf है? अगर आपको पता होगा ये किसका mgf है? डिस्क्रीट का mgf है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का mgf है। तो कैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का mgf है? एट x इज इक्वल टू स्मॉल x, p ऑफ x इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू यहाँ पे 0, तो प्रोबेबिलिटी 1/6, x की वैल्यू 1, प्रोबेबिलिटी 1/3, x की वैल्यू 2, प्रोबेबिलिटी 1/3, x की वैल्यू 3, प्रोबेबिलिटी 1/6। तो हमें पूछा क्या गया है? प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 2। तो जब लेस और इक्वल टू 2 है तो ये तीन प्रोबेबिलिटीज ऐड होगी,
1/6 plus 1/3 plus 1/3. That is 1/6 plus 3 2/3. So that is 5/6 is the correct option. एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है लेट x be a non-constant positive random variable such that expectation of x is equal to 9, then which of the following is true? पहला ऑप्शन expectation of 1/x plus 1 that is greater than 0.1 and probability x greater than 10 is less or equal to 0.9. Option number 2, expectation of 1/x plus 1 less than 0.1, probability x greater or equal to 10 is less or equal to 0.9. Expectation of 1/x plus 1 greater than 0.1, probability x less or equal to 10 greater than 0.9. Expectation of 1/x plus 1 less than 0.1 and probability x greater or equal to 10 is greater than 0.9. So see, this question is a mixture of two concepts. So the one concept is which is involved in this type of question is Markov's inequality, and number 2 is the property of expectation. ठीक है, if you know कि हम expectation of 1/x plus 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, that's greater than or equal to expectation of x plus 1. So see, this is greater or equal to 1/, what's expectation of x? That's 9. 9 plus 1 is 10. So this is equal to 0.1. तो ये किसके बराबर होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x plus 1. यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे ग्रेटर देन था. सो दिस इज ग्रेटर देन 0.1. देखो ये ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसल आउट हो गया. अब बचे यहाँ पे दो ऑप्शन. अब हम सेकंड वाले पे जाएंगे. ये था फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज मार्कोस इनइक्वालिटी पे बेस है ये. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 10 is less than expectation of x divided by 10. What's expectation of x? That is 9/10. So this is equal to 0.9. Less or equal to 0.9. So option first is correct. Now see, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द CDF ऑफ मतलब रैंडम वेरिएबल का जो CDF होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, उस पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है. क्लियर? सो द क्वेश्चन इज कि वी आर गिवन विद द CDF एंड वी नीड टू कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज. वी नीड टू कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज कि हमें ये प्रोबेबिलिटीज यहाँ से फाइंड करनी है. ये प्रोबेबिलिटीज हमें, ये क्या हो गया? हाँ, ये प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है. तो सी कैसे करेंगे हम? तो देखिए, फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट कि जब भी हमारे पास CDF गिवन होगा तो हमें ये प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती है. अगेन वी आर गिविंग यू द फॉर्मूलाज कि जब
एफ ऑफ एक्स एट सम एक्स पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ये किसके बराबर होता है, दिस इज माई सी डी एफ सिंपली। एंड अगर किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स ए गिवन है ना यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स ए माइनस, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू। प्रोबेबिलिटी अगर ये पूछा गया कि ना यहाँ पे इक्वलिटी है ना यहाँ पे इक्वलिटी है, तो ये किसके बराबर होगा, जब दोनों साइड इनइक्वलिटी नहीं होती है तो ये बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी है ना, तो एफ ऑफ एक्स ए। क्लियर है। नाउ नंबर 3, जब ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, एंड जब ये पूछा जाएगा दोनों साइड इक्वलिटी भी, तो ये ही सब आपसे पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा ना, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाओ तो इन्हीं सब पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो सी इसकी फॉर्मूला क्या है, जो ये वाला है एक साइड इक्वलिटी, तो ये डायरेक्टली होता है एफ ऑफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए, और ये एफ ऑफ एक्स बी एक साइड इक्वलिटी है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स ए माइनस, और ये जब दोनों साइड इक्वलिटी होती है तो ये होगा बराबर। क्लियर है। दोनों साइड जब इक्वलिटी होती है तो ये होता है बराबर इसके एफ ऑफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए। क्लियर। सो यही आपको फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना है। तो सी इसको हम अप्रोच अब कैसे करेंगे, इसको हम ये सॉरी ये होता है यहाँ पे बराबर जब दोनों साइड इक्वलिटी होती है, एफ ऑफ एक्स दिस इज ए माइनस, और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इनइक्वालिटी होगी। क्लियर है। क्लियर है। सो सी इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम कैसे याद करेंगे। क्या पूछा गया है पहले, प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स वन। व्हाट्स थ्री नेगेटिव, यहाँ पे थ्री है तो थ्री नेगेटिव हुआ टू, सो टू यहाँ से आएगा, मतलब समझो इस चीज़ को, एफ ऑफ एक्स थ्री है ना, तो थ्री किस रेंज में लाई करेगा इसमें, सो थ्री माइनस, जब हम थ्री का माइनस वन करेंगे तो वो क्या आएगा, टू। सो एफ ऑफ टू कहाँ पे, इक्वलिटी है ना, तो यहाँ से आएगा, मतलब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू भी यहाँ से आएगी, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज थ्री स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अब एफ ऑफ एक्स वन कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स वन कहाँ से आएगा, तो सी एफ ऑफ एक्स वन कहाँ से आएगा, यह आएगा आपका वन, इस रेंज में लाई कर रहा है ना, वन इस रेंज में लाई कर रहा है, तो वन यहाँ से आएगा, सो दिस इज 1/8, सो दैट इज इक्वल टू 9/16 माइनस 2/16, that is 7/16. So part A is correct. Now number 2, part number 2, probability y is greater than 1.5. तो सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू x इज इक्वल टू दिस, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 माइनस एफ ऑफ x 1.5, क्योंकि आपको पता है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 1.5 कहाँ से आएगा, दैट इज 3/2। सो 3/2 वो तो यहाँ से आएगा ना, ग्रेटर देन 1 है ना, तो यहाँ से आएगा, सो 1 माइनस
यहाँ पे क्या आएगा y की जगह 1.5 अपॉन 8, 1.5 अपॉन 8, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 minus 15 upon 80, that is 80 minus this is 65 upon 80, that is 5 ones are 5, 5 threes are, and 5 16s are, so 13 upon 16, this is also correct. Now what is C part, तो C part को देखो आप कि C part हमें कैसे करना है। तो C part हम कैसे करेंगे, probability y is greater or equal to 1 given y is less or equal to 3. सो इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज द कंडीशनल ना, कंडीशनल है, तो ये कैसे बराबर होगा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन 1, सो इंटरेक्शन पार्ट विल बी दिस, सो ये होगा प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी y लेस और इक्वल टू 3, सो दिस इज f of x3 minus f of x1 divided by f of x3. What's f of x3? That is, यहाँ से आएगा ना 3, so that is 9 upon 16 minus f of 1 कितना होगा 2 upon 16 divided by f of x3 भी यहाँ से आएगा, so 9 upon 16 that is equal to 7 upon 16 multiply 16 upon 9, so this and this goes, this is equal to 7 upon 9. क्लियर, ये भी हमारा करेक्ट है, मतलब तीनों पार्ट हमारे करेक्ट है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको बस क्या याद रखना है, ये फार्मूलाज आपको याद रखनी है, बस इन फार्मूलाज पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको CDF पे आएंगे वो आपको इन 5 फार्मूला से क्लियर हो जाएंगे।